Bismillahirrahmanirrahim. Thank you for the kind introduction, or good afternoon. Few people, I hope के बाकी colleagues भी आ जाएंगे. Thank you very much, Feroz Sons, with this unique honor. Okay, this is the 12th Liver Summit, and Alhamdulillah, I've been the part of each and every one. बहुत सारे मेरे colleagues हैं, सलीम भाई हैं, असद भाई हैं, लेकिन मैं और अरुण, we are the हमीद साहब भी थोड़ा सा, बिलाल भाई भी थोड़ा लेट हम ज्वाइन किया. We have been the only two के जो सब में रहें, लेकिन यूनिक ये है कि अब पिछले 3 में अरुण भी ऑनलाइन हो जाता है. तो thank you once again for Feroz, your confidence on that. I think this is the most अच्छी बात तो ये है कि कोई डेटा नहीं है इसमें, न कोई मैं आपके साथ कोई जो पेपर्स हैं वो डिस्कस करूँगा. सिंपली जो हम रूटीन में करते हैं, स्पेशली फॉर माय यंग कॉलीग्स, जो हम क्लिनिक में होते हैं, पेशेंट आ जाता है और हाउ वी गो अबाउट. तो बेटे कौन सा वाला आगे जाएगा? ओके. So the management of HBV in the light of new guidelines, we know there has been plethora. शायद हमारी पैथोलॉजी में यही एक डिजीज़ है कि हर साल हमें अपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स में कुछ ना कुछ चेंज, फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ती है. एंड दिस इज़ फॉर द रीजंस के ऑलमोस्ट तकरीबन हर साल किसी न किसी बिग बॉडी से, चाहे AACD है, चाहे ईजल है, चाहे वो अपाजल है, WHO से एक गाइडलाइंस आ जाती है, और फिर हमें थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिस को फाइन ट्यूनिंग करनी होती है, उसमें कुछ चेंज लानी होती है. स्पेशली जब लास्ट 4 गाइडलाइंस 2023 में जब चाइनीज़ गाइडलाइंस आई, 2024 में WHO आई, और इसके बाद फिर लास्ट ईयर ईजल, और फिर दी कपल ऑफ मंथ्स अगो AACD की जो आई, इसने नेचुरली, और जब WHO के टारगेट आया कैट 2030 हेपेटाइटिस एलिमिनेशन BC फ्रॉम द वर्ल्ड, तो नेचुरली ये चीज़ हमें बियॉन्ड भी जो रूटीन में हम जा रहे होते थे, अब तमाम गाइडलाइंस पहले थोड़े से दीज वॉर दी कि इफ़ इट इज़ इंडिकेटेड ट्रीट दिस पेशेंट्स, अब आ रहा है कि इफ़ इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड डोंट ट्रीट अदरवाइज. वो कैनवस बढ़ा रहा है कि किन किन को हमने इंट्रोड्यूस करना है. सो इन माई दिस 15 minutes or so talk, if a patient comes to me in my clinic, so the 2 main questions: when to start treatment and when to stop treatment. और इसी को जवाब हम ढूंढेंगे कि जो गाइडलाइंस हैं और हाउ आई एम ट्रांसलेटिंग दोज इनटू माय क्लिनिकल प्रैक्टिस इज, पेशेंट आया, उसके हाथ में HBs एंटीजन पॉजिटिव का एक टेस्ट है. अब आया, इसको मैं ट्रीट करूं या इसको ट्रीट ना करूं, और इसको फॉलोअप में रखूं कि कब उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी. यही क्वेश्चन, इसी को हम आंसर करने की कोशिश करेंगे. देयर शुड बी नो रिफ्लेक्स एक्शन कि जी HBs हुआ, PCR करो, बस इलाज करो. वी शुडंट फॉरगेट आवर बेसिक्स ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन, and that means detailed medical history. Of course, the physical examination and investigations का रोल उसके बाद में आता है. उमन बदकिस्मती से मेरे पास पेशेंट आ जाते हैं, HBs भी होता है, साथ में PCR भी होता है, उस कोलीग ने कुछ भी नहीं किया होता जी, बस यार कुछ ज़रूरी होता है, बिकॉज the decision of whether I need to treat or not is not that simple. So important is कि okay, चलो आ जाए. Well, history में mostly we know the basics of the patients, the age is important, उसकी family history is important. ये जो उसको HBs एंटीजन पॉजिटिव आया है, whether he has presented to us, it was a case of acute hepatitis, या previously कोई hepatitis की history थी नहीं थी, how the patient was found to be having HBs एंटीजन पॉजिटिव, उसकी कोई family history है कि नहीं है, hepatitis B in the family आया, उसकी कोई cirrhosis की history family में है कि नहीं है, B related, कोई liver cancer की history है कि नहीं है. All these are very important, because until unless you have this data, आपको आगे जाके
जिसने हेल्प आउट करने. So we know age of the patient is important. बाद में देखेंगे why this is important. Has the patient presented with acute hepatitis? Any history suggests acute hepatitis in past? If not, how the patient was found to be positive? Screening थी, कुछ और reason था. Liver cirrhosis patient may come कि जी मुझे कोई bleed भी हुआ था या वो भी होता, तो they come. Maybe they would just check the test. Otherwise, उनकी history आपने लाजमन पूछनी है. And of course, any co-infections अगर known है, comorbidities like diabetes, fatty liver disease, family stuff, liver cancer, all those, and either the patient is on immunosuppressive therapy or extrahepatic manifestation. All these information is important to get with you because this will help you out. स्पेशली उन केसेस में कि जो ग्रे एरियाज हैं कि आया आपने इस पेशेंट को ट्रीट करना है कि ट्रीट नहीं करना. कमिंग टू फिजिकल एग्जामिनेशन, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कोई क्लिनिकल एविडेंस ऑफ एसाइटिस, पेरिफेरल स्टिग्मेटा ऑफ लिवर सिरोसिस है नहीं है. एंड ऑफ कोर्स जब इन्वेस्टिगेशंस की बात आती है, डजंट मीन कि ओनली वन इन्वेस्टिगेशन. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द बेसिक इन्वेस्टिगेशन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस बी इज टू नो द लिवर स्टेटस. इसका पिवटल रोल है और ये हमें नहीं भूलना चाहिए. एंड ऑफ कोर्स है यहाँ पे एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, नॉन इन्वेजिव लिवर टेस्ट. फॉर लैब वर्कअप में ऑफ कोर्स वी कैन डिवाइड देम इनटू वायरोलॉजिकल टेस्ट्स टू नो द को इन्फेक्शंस एंड बेस लाइन टेस्ट. एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड का अगेन अ पिवटल रोल इन लिवर स्टेटस है. इट टेल्स यू वेदर द पेशेंट इज सिरोटिक और नॉट, कोई स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन तो है कि नहीं है. और फॉलोअप में भी हमें पता चलता है कि हाउ द पेशेंट प्रोसीड्स. When the liver is normal, the non-invasive tests, they have their role, the APRI, FAB, and fibroscan, and they tell you that ultrasound pe liver may be normal, but the patient may be having advanced fibrosis, significant fibrosis. So for hepatitis B, there are its own values. The guidelines are batate hain. These are the agreed values for F4 fibrosis and F3 fibrosis. And of course, when we come to the lab, we can divide them into three to do the virological test. Every age-based antigen patient must be having the quantification of PCR, E antigen, E antibody, because if at all you are going to stop, this then matters. And of course, if the patient has got the co-infection, then HCV, qualitative PCR. Then the anti-HBV co-infections, and it should be reflex action that when a patient is age-based antigen positive, please do check for anti-HBV, and when anti-HBV is positive, check for its PCR and the lab, baseline lab. So all these when we do, so what we have, history and clinical examination, if there's any evidence of cirrhosis or its complication, abdominal ultrasound showing whether cirrhosis, portal hypertension or liver mass, non-invasive tests, and we should be clear whether my patient is having insignificant fibrosis, significant fibrosis, or the patient has got cirrhosis. And of course, the quantitative PCR, we must be knowing if it is detected or undetected, and if it is detected, what's the viral load, whether this is more than 2,000 or less than 2,000. Having this data with us, now we proceed how to go about. And of course, the LT is very important. Know the for male, the 35 is the upper limit, and for the female, it is the 25. So when we have this data with us, then it is easy for us that how we should be whether going to treat this patient or not. So in 2023, the Chinese guidelines came, and even they suggested that it is only qualitative PCR needed, not quantitative. And then came the WHO guidelines, which the famous 4 options were there. Then came the EASL guidelines, and again it tells whether the patient has got the quantification, what much quantification. Then the AASLD, a few months back, again showing the E antigen positive, its own areas, the E antigen negative, the 2 clear areas and the gray areas, and of course so I won't go into detail of these, how we can translate that into clinical practice when sitting in the clinic, but I do personally, I'll be sharing with you that. Patient having HBs antigen positive, first thing which you should consider, of course, that data, the viral load, the E antigen status, and liver status, it's with us. But whether this patient needs, there's reactivation of HBV warranted or not. And most patients, they are referred to us whether they are going to be started on immunotherapy or this rheumatoid or something like that, and they ask what to do if they are HBs antigen positive. Even in this scenario, if the patient needs that, the prevention of reactivation is because
Once hepatitis B, always hepatitis B, lifelong hepatitis B. Even HBs antigen negative patient can reconvert. HBs antigen may become positive. So when HBs antigen is positive and patient is going to undergo these sorts of drugs, if it is yes, this patient needs treatment. So this is the first step. If there is no need for the prevention of the reactivation, then comes the second option, and that is the liver status. If my patient liver status has got cirrhosis, or the patient has got HCC, or the patient has got a liver transplant patient, if he falls in this category, again, he needs treatment. Here the viral load and the ALT becomes irrelevant. But if liver status is okay, there is no F4 fibrosis or other grave liver statuses, so then here comes the role of the hepatitis B viral load and the ALT. My patient doesn't fall in this first class or in the second, normal liver or F1, F2, or maximum F3 fibrosis. No need for prevention of the reactivation. No, the deciding factor is the viral load and the ALT. And the Chinese, they said, just positive PCR in a raised ALT. Double SLD said, for HBe antigen positive, 20,000 units for the E antigen positive with ALT more than 2 times raised, or for E antigen negative, 2,000 viral load with ALT just raised above the upper limit normal. The WHO, again, they said the 2,000, considered that figure with raised ALT. EASL, again, 2,000 with ALT. Personally, I follow this figure of 2,000. It's simple and it's easy to implement. So, in this stage, as I said, this is the viral load and the ALT which matters. And 2 M's. My patient ALT is more than 2 times, is raised with viral load more than 2,000, or the patient may be the PCR undetected, whatever ALT is there. These are the 2 clear indications, or clear scenarios. So for the first scenario, when the viral load is more than 2,000, ALT is raised, this patient needs treatment. On the green side, whatever ALT is there, but the PCR is negative, patient needs to be put in the follow-up groups and see follow-up every 6 months, that whether the patient needs treatment later on. But things don't follow like this. It may be viral over the 2,000, but the ALT normal. And most of our cases fall in this class, or viral load less than 2,000, ALT is raised. The third scenario possibility is viral load less than 2,000 and ALT normal. So green, red, they are the clear. What about these yellow, the gray zones? And this is the terminology, this is the SSLD guideline is saying, shared decision making. You then individualize the therapy, the decision whether I should treat this patient or not. How we go about that, and these are covered by the guidelines, that if the liver status has got significant fibrosis, F2, F3, all guidelines, the Chinese, the WHO, the EASL, the SSLD, they cover this. Or if the patient has got extra hepatic manifestation of hepatitis B, or if the patient has got co-infection of hepatitis D, C, or HIV, or age is more than 40 years for male, and platelet less than 180,000, this platelet figure I have taken from the SSLD guidelines, or there's family history of liver cancer or cirrhosis. EASL, Chinese, the WHO, and SSLD all agree on that. So if any scenario is there with this yellow area where they don't fall in the clear-cut indication to start, or clear-cut indication, don't start the treatment. In this, if anyone is there, any scenario of these 4, 5 is there, it is start the patient on treatment. But if none of these is there, patient is that yellow region or the gray area, don't treat, follow up.
a time when the patient cirrhosis, fibrosis gets worsened or any other complication happens, or the viral load increases, the ALT increases, and then the patient qualifies for the treatment. So this is a simple algorithm which you can follow. I follow most of the time this one in your everyday clinical practice. But you should be having all that data with you, which I shared with you, full history, examination, and the relevant and important investigations. Which drug to use? I won't go into the detail. We all know that, the entecavir, we know it's the class, its dose. Important point is it should be taken on empty stomach. So entecavir on empty stomach. Remember that. 2 hours before the food or 2 hours after the food. This is one important point. Preferred drug in elderly and decompensated cirrhosis, but in decompensated cirrhosis, the dose is 1 milligram. And of course, renal sufficiency. For TDF, it may be taken with or without food. So remember this. We know the dose, we know its relationship with the food, and it's a preferred drug in decompensated cirrhosis, pregnant ladies and women of childbearing age. We all know that. And then the TAF, it should be taken with the food. So this is very important. Please instruct your patients for entecavir on empty stomach, and TDF with or without food, and TAF should be with food. They are after food. खुराक ली, after food आप इसको कहें कि आप लें, तो ये आपके लिए easy रहेगा to remember. And we all know that कि अगर हमारा renal impairment है, decompensated cirrhosis है, तो dose modification आपको करनी पड़ती है. The same is, we monitor these patients on treatment, ALT, HBV DNA, ये हम treat करते for HB antigen positive, E antigen और anti-HB, ये हम every 12 months करते हैं. Of course, after virological response is issued, check HBs antigen every 12 months. जब तक PCR नेगेटिव नहीं है, HB antigen नेगेटिव है, HBs antigen चेक करने की या उसकी वायरल लोड, अगर पेशेंट इंटरफेरॉन पे है तो फिर वायरल लोड अदरवाइज उसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसी कॉस्ट बढ़ जाती है फॉर द ट्रीटमेंट. ऑफ कोर्स रीनल फंक्शंस को मॉनिटर करना ज़रूरी है. नॉन सिरोटिक पेशेंट्स का अपना प्रोटोकॉल है, फॉलो अप का, और सिरोटिक पेशेंट्स का अपना प्रोटोकॉल है. वी ऑल नो दैट. जस्ट टू रिमाइंड के ये हमने करना होता है. व्हेन टू स्टॉप? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एंड अगेन what I follow and simple to remember is, if I have started my patient on interferon, it means we have to stop the treatment after 48 weeks. Response किया कि नहीं किया, हमने stop करना है. It's a right. If my patient on oral drugs, F2, F3, F4 fibrosis, again lifelong therapy. Just like अगर हम वो सिरोसिस में जिस तरह इंडिकेशन वॉज कि जब F4 फाइब्रोसिस थी, उस वक्त इवन विद नेगेटिव PCR वी हैड टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट. F2 F3 थी, और अगर वो इवन येलो एरिया में था तो फिर भी हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे थे. वंस वी स्टार्ट द ट्रीटमेंट, पेशेंट ट्रीटमेंट शुड बी लाइफ लॉन्ग. What about if my patient has got F0 or F1 fibrosis? AVT may be stopped. I'm not saying should be stopped, may be stopped. और यहाँ पे again shared decision making approach, patients की motivation, patients follow up के लिए कितना regular है, कितना नहीं है. एक patient है वो बोलता है जी मैं टीके बंद कर रहा हूँ, not willing for, और कह रहा है कि मैं regular भी आऊँगा, तो फिर क्या करना है? Again to make the thing simple, guidelines plus minus तमाम guidelines इस पे agree हैं. I'll make it more simple for you. अगर पेशेंट्स का HBs एंटीजन, उसका HBs एंटीजन भी नेगेटिव हो गया और PCR भी नेगेटिव हो गया, फर्स्ट सिनेरियो दिस वन, सो द पेशेंट शुड रिसीव AVT फॉर एडिशनल 1 year. ये ब्लू आप देखें नीचे, पेशेंट का HBs भी नेगेटिव हो गया, PCR भी नेगेटिव हो गया. इस टाइम के बाद मजीद 1 year तक ट्रीटमेंट उसको दें, एंड देन you can stop provided patient is willing for very regular follow-ups. अगर patient का सिर्फ PCR नेगेटिव है, HBs antigen still positive है, and this is the AACD guidelines की statement है, and his HBs antigen level is less than 100 units. फिर आप सोच सकते हैं कि मैं ट्रीटमेंट को स्टॉप कर सकता हूं, लेकिन it depends upon E antigen status. Green,
HBs एंटीजन पॉजिटिव है लेकिन लेवल है लेस देन 100, E एंटीजन नेगेटिव हो गया, ये ग्रीन पे देखें, he was to start with HBe antigen positive. This patient now should receive additional 2 years therapy. And the PCR should remain negative, E antigen should remain negative. And then you can think about stopping. Patient HB antigen negative था to start with. HBs positive है, but it is less than 100 units. That patient should have additional 3 years therapy. And during all these 3 years' time, PCR should remain negative. Only then you can think about, well, I can stop the patient's treatment. So practically, यहाँ भी lifelong therapy है. अगर ये patient stop करता है, तो this is very, very important. ALT, HBV DNA should be monitored every 1 to 3 months for initial 6 months, then every 3 months for the next 6 to 12 months. Thereafter, monitor at 3 to 6 months intervals depending upon the ALT and HBV DNA values. Treatment should be restarted immediately. These are the AACD guidelines. If any of the following criteria are met, HBV DNA more than 10,000 rise कर गया, regardless of the ALT levels, आपने follow up कर रहे थे. ALT more than 5 times rise कर गया, regardless of the HBV DNA, flare में चला गया. Total bilirubin more than 2.5 हो गया, जब आप follow up कर रहे थे. Are any symptoms of hepatic decompensations, restart the patient on treatment. ठीक है? They may be restarted any time for any of the following reasons. Patient wish to restart. Patient ने कहा जी तंग आ गया हूँ जी, मैं क्या बार बार टेस्ट कर लूँ, दोबारा शुरू कर रहा हूँ. Yes, restart. These are the AACD guidelines statements. Extra hepatic complications आ गई, या treatment initiation criteria जो आपने शुरू में किया था वो दोबारा मिट हो गया. And it may be restarted. Okay. So just last 2 slides. Hepatitis B in pregnancy. I am simplifying the things. Pregnant ladies already on treatment for hepatitis B. एक scenario ये है, treatment पे थी, pregnancy हो गई. If she is on entecavir, it should be changed to TDF preferred or TAF. If she is on TDF or TAF, it should be continued as such. After delivery, HBV vaccination or hepatitis B immunoglobulin, यह बच्चे को देंगे. Otherwise, treatment will remain continued. If the second scenario can be pregnant lady with unknown status of HBV infection, antenatal clinic में आई, and these should be screened for that. And she was found to be HBs antigen positive for first of the time. Reflex action है कि आप इसका DNA quantification भी कर लेंगे, बाकी भी देख लेंगे. If the patient qualifies for antiviral treatment, you start the patient at TDF preferably or TAF as a standard protocol. अगर patient does not qualify for the antiviral treatment, और इसका viral load is more than 200,000, तो यहाँ पे आप उसका mother to child transmission indication में treatment start करेंगे, preferably 28 weeks of pregnancy. क्योंकि इस viral load पे transmission के chances ज़्यादा हैं. And of course vaccination हो जाएगी, and after delivery, newborn should be given HBV and HBV vaccination. If mother is found to be HBs antigen positive by ELISA at the time of delivery, delivery के लिए आई, कोई उससे एंटीनेटल क्लिनिक नहीं था, उस वक्त अब चंद घंटों में डिलीवरी हो रही है, फिर क्या करना है? Give the newborn HBV vaccination. We don't know क्या status रही है. Check the mother HB antigen and NHB and ALT and DNA quantitative PCR. If she qualifies for treatment, start the patient on treatment. If she does not qualify, to start her on the TDF or TAF till completion of infant HBV vaccination or prevent mother to child infection. AACD बोलती है कि after delivery अगर आपने mother to child transmission prevent करने के लिए यदि आप stop कर दें, लेकिन we agree we should be giving till the completion of the at least 3 doses of the HBV vaccination to that infant. Scenarios which I have not covered and that can be discussed in our discussion. How to treat HBV in children 2 to 11 years old, ये मैंने touch नहीं किया. How to treat patients with acute hepatitis B, ये भी touch नहीं किया. How to treat BD co-infection, D पे हमने lecture सुना, तो
प्रॉब्ली मोस्टली ये वहाँ पे कवर हो गया था। हाउ टू ट्रीट HBV HCV की कोई इन्फेक्शन, ये भी मैंने नहीं किया। वी कैन डिस्कस दिस इन द डिस्कशन। एंड हाउ टू ट्रीट HBV इन पेशेंट विद डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट। और ये बड़ी नाशुक्री होगी कि अगर मैं अल्ताफ़ साहब का शुक्रिया अदा ना करूँ, ज़ैकम साहब का ना करूँ, बाकी मेरे तमाम हैपनेट मेंबर्स साले हैं, ज़िशान भाई हैं, ज़ैद आज़म हैं, कि वी हैव बीन वर्किंग ऑन दिस HBV गाइडलाइंस फॉर द लास्ट 2-3 ईयर। जब चाइनीज़ आई हमने इस पर काम करना शुरू किया। हर साल एक नई गाइडलाइन आती है, हम उस पर फिर फाइन ट्यूनिंग करते हैं, फिर नहीं आते फिर फाइन ट्यूनिंग करते हैं। सो दिस ऑल algorithms and all discussion was really I had the tremendous and very enormous help from the Altaf Saab and all my colleagues. So once again, thank you very much, sir. This was all possible because of you. And as I said, कि हर साल हम अपने प्रोटोकॉल में चेंजेस करते रहते हैं और शायद आगे भी चलते रहेंगे। Thank you very much for your kind listening.